everyone, welcome to the session. Today we'll be going through some words from the newspaper, and from that we will practice. Just a second. Yeah. And from there we will be practicing how to find out the meaning of those words. So it's going to be like a little practice session, a short video, a little practice session on passage-based vocabulary. If you want to watch in detail how to solve passage-based vocabulary questions, what are the techniques and tips you can follow, and what are the 6 steps that you can use to guess the meaning of any possible word given in the CLAT examination asked through a passage, watch my previous classes on passage-based vocabularies. You will be able to find all of these classes on the same YouTube channel, that is Unacademy CLAT. So of course it is very important that you follow the YouTube channel and subscribe to it so that आप क्लासेस मिस ना करो, बिकॉज मैं ऑलरेडी एक क्लास ले चुकी हूँ जहाँ पे मैं डिटेल में समझा चुकी हूँ कौन सी वो 6 स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम किसी भी वर्ड का मीनिंग बहुत आसानी से गेस कर सकते हैं. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द प्रैक्टिस सेशन, 15 दिसंबर को क्लैट 2022 एस्पिरेंट्स के लिए एक नया 6 मंथ बैच स्टार्ट हो रहा है. दिसंबर बहुत हाई टाइम है अपना क्लैट 2022 प्रेपरेशन स्टार्ट करने के लिए, तो इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर प्रेपरेशन, join the batch. And similarly CLAT 2023 एस्पिरेंट्स के लिए 17 दिसंबर को बैच स्टार्ट हो रहा है. आपका एग्जाम 1 साल बाद है, आज से एग्जैक्ट 1 साल बाद 18 दिसंबर 2022 को CLAT 2023 के एडमिशन्स का एग्जाम होने वाला है. तो यू हैव 12 months, and for all of these batches, either a 6 month batch or a 12 month batch, you can take an Unacademy Plus subscription. और फिर वो जो 6 months बैच है या 12 month बैच है, इनमें सब्सक्रिप्शन जब आप लेते हो तो यहाँ पे आपको बॉटम में ऑप्शन मिलता है 10% डिस्काउंट का. तो NLU लाइव कोड आप यहाँ पे टाइप करके उसको अप्लाई कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली ये सारी जो अमाउंट है, जो प्राइस है, उस पर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो द कोड इज NLU LIVE. उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको अनअकैडमी के बैचेस और क्लासेस का पूरा एक्सेस मिलेगा जिसमें आप सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो देन अनअकैडमी की. नाउ लास्टली बहुत सारी फ्री क्लासेस, फ्री सेशंस भी अनअकैडमी के ऐप पर होते हैं. फॉर एग्जांपल 13 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक लगातार 5 दिनों तक मैराथॉन्स हैं. तो 13 को लीगल का मैराथन, 14 को इंग्लिश का मैराथन, दीज आर ऑल कम्प्लीटली फ्री. तो इनको तुम अनअकैडमी के ऐप इंस्टॉल करके देख सकते हो. ऑल्दो जब तुम पहली बार अनअकैडमी के ऐप इंस्टॉल कर रहे हो तो तुम्हें नए क्लासेस को अनलॉक करने के लिए कोड की जरूरत पड़ती है. कोड वही सेम है NLU लाइव, बट जब आप फ्री बैचेस को यूज करो तो आपको कुछ पे नहीं करना है, बस कोड को यूज करोगे ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा. बट जब सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पेमेंट करने से पहले कोड को यूज करोगे तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो एक कोड फायदे अनेक टेक्निकली. यस, एंड ऑल्सो एजुकेटर क्यूरेटेड टेस्ट एवरी ट्यूजडे, एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे. दीज आर एक्सेप्शनली गुड टेस्ट, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हैं. तो आपका नया टेस्ट जो है वो बेसिकली आई थिंक कल है, 13th को या 14th को, नो डे आफ्टर टुमारो आई गेस. यस, so this is your schedule for educator curated test for the month of December. So just make sure that you're giving these tests and you're learning something new from all of these tests, because तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन टेस्ट पे. ये जितने भी एजुकेटर्स के इमेजेस देख रहे हो ना, ये सारे एजुकेटर्स ने खुद ये टेस्ट बनाए हैं. एंड एट द सेम टाइम मेंटी क्विज है आपका 17 दिसंबर को 3:30 PM पर अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे यू कैन ऑल्सो गेट 500 रुपीज Amazon वाउचर. एंड या दैट इज इट. चलिए फिर जस्ट हम विल जस्ट हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन वोकैबुलरी. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल के लिए आई हैव टेकन टुडेज न्यूज़पेपर विच इज़ द हिंदू, एंड हम कोई भी एक आर्टिकल को पढ़ेंगे और उस आर्टिकल के थ्रू हम अपने एक्चुअली वोकैब के पावर को चेक करेंगे. कौन सा आर्टिकल दें? Okay, so let's talk about the Ukraine crisis. Let's use this article as an example. LSAT के एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन कैसे करूं? जैन का ओवर हो गया है. हाँ जी, जनवरी का ओवर हो गया है. मार्च में भी एक और बार LSAT का एग्ज़ाम होगा, तो आप नेक्स्ट सेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हो. LSAT के मार्च या मई में एक और बार होगा LSAT 2 बार होता है. तो अब अगले बार के LSAT के लिए ध्यान रखना जो नेक्स्ट सेशन में होने वाला है.
Okay, so here's the passage on the screen. At the center of the Ukraine crisis is basically an explainer. So let's just start it. और फिर हमें जो भी नए वर्ड्स मिलेंगे उनका मीनिंग हम साथ में, मैं आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताऊंगी, मतलब यहाँ पे हम वो डिक्शनरी वाला कॉपी पेस्ट नहीं खेल रहे हैं, हम यहाँ पे मीनिंग गैस करने की कोशिश कर रहे हैं. सो देयरफॉर आई लाइक बेसिकली गाइड यू टुवर्ड्स एन overview of that particular word. So Donbas, a small region in eastern Ukraine adjoining the Russian border, is no stranger to military conflicts. So ये दो words की meaning मैं आपसे पूछ रही हूँ. One, adjoining. Two, no stranger. तो अगर adjoining का मतलब नहीं जानते तो देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डॉनबास एक छोटा सा रीजन है ईस्टर्न यूक्रेन में जो रशिया के बॉर्डर को एडजॉइन कर रहा है. तो इसका मतलब जो रशिया के बॉर्डर के करीब है, विच इज वेरी नियर, विच इज लाइक टचिंग द रशियन बॉर्डर. ओके, सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड एडजॉइनिंग. देन इज नो स्ट्रेंजर टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स. तो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं इस एरिया में होते रहते हैं. स्ट्रेंजर मतलब कोई ऐसी चीज जो आपने कभी नहीं देखी, जिससे आप कभी नहीं मिले. तो ये जो डॉनबास का रीजन है ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से मिलता रहता है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर. दैट दिस रीजन इज नो स्ट्रेंजर टू मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स. दैट मीन्स एक ऐसा रीजन है जो कई बार मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में होता रहता है, या मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पर होते रहते हैं. नेक्स्ट लाइन, आफ्टर द फॉल ऑफ द रशियन एम्पायर. फॉल ऑफ द रशियन एम्पायर, रशियन एम्पायर का गिर जाना मतलब रशियन एम्पायर का खत्म हो जाना. The region was incorporated in the newly created Ukrainian People's Republic in 1918, and then came the Bolsheviks who were fighting a civil war against the remnants of the old regime. Now, what is the meaning of the word remnant and what is a regime? Now these are the other two words that we can learn. So basically आप देख रहे हो हमने तीन sentences पढ़े हैं अभी तक, और उन तीन sentences में हम 5-6 नए words देख पा रहे हैं. So therefore I keep saying that newspaper जब हम पढ़ ही रहे हैं current affairs के लिए, it's also a very good source of improving your vocabulary. अमित, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए अमित बेटा मैं क्रिटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ाती, आई एम सो सॉरी, बट क्रिटिकल रीजनिंग के लिए अगैन आपको क्लासेस अटेंड करनी है. क्लासेस से पहले तो आपको टेक्निक सीखनी है, क्रिटिकल रीजनिंग के अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे आंसर करते हैं, एंड देन आपको पैसेजेस पढ़ के बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है क्रिटिकल रीजनिंग के लिए. स्नेहा, क्लैट की एग्जाम 1 ईयर में 2 बार होगी. नहीं स्नेहा, ये फालतू बातों में अपना दिमाग मत लगाओ, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो. क्लैट कंसोर्शियम अगर कोई चेंज करना चाहता है, वो चेंज करना चाहते हैं कि आगे से हम फ्यूचर में हमेशा क्लैट का पेपर दिसंबर में करेंगे, तो 1 साल पहले साल जब वो चेंज कर रहे हैं उस साल तो गड़बड़ होगा ना भाई. यूज योर कॉमन सेंस. जब क्लैट 2023 का पेपर दिसंबर 2022 में हो जाएगा तो फिर अगले साल 2 पेपर कैसे होंगे? अगले साल फिर सिर्फ 2024 का पेपर होगा ना. तो आई मीन यूज योर कॉमन सेंस एवरीवन. हेमंत, 3 ईयर एलएलबी के लिए एनएलयूज में एडमिशन नहीं होगा. नहीं हेमंत, एनएलयू से 5 ईयर एलएलबी के लिए प्रिपेयर कराते हैं. बेसिकली एनएलयू में 5 ईयर एलएलबी कोर्स होता है, 3 ईयर एलएलबी कोर्स नहीं होता है एनएलयूज में. नाउ रेमिनेंस ऑफ ओल्ड रिजीम. सो देखिए जरा इस सेंटेंस को ध्यान से. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? देन केम द बोल्शेविक्स who were fighting a civil war against the remnants of the old regime. Old regime मतलब पुराना regime. तो regime क्या हो सकता है? पुराना system, पुरानी सरकार, पुराना empire. तो पुराने empire के क्या बचे हुए थे जिनसे ये बोल्शेविक्स लड़ रहे थे? Remnant. तो इसका मतलब है बचे कुचे हिस्से, बचे कुचे टुकड़े. जो पुराना सिस्टम आधा खत्म हुआ पर पूरा खत्म नहीं हुआ. सो द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द ओल्ड रिजीम. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेमिनेंस हियर. Now moving on, Donbas became part of the Ukrainian Soviet Socialist Republic. During the Second World War, the Nazis took the region. Over 3 lakh civilians were killed in Donbas in Donbas alone during the Nazi occupation. Now what is the meaning of the word occupation? Occupation का एक meaning हम सब जानते हैं, which means your profession, your job. But यहाँ पे जब हम Nazi occupation की बात करें तो we mean जब Nazis ने occupy करा, कब्जा करा जिस वक्त उस एरिया पे. In 1943, after defeating the Nazis in Stalingrad, the Red Army took Donbas back. In 1991, with the disintegration of the Soviet Union, the region which comprises the Donetsk and Luhansk Oblast became part of the newly born Ukrainian nation. Now, disintegration का क्या मतलब होता है? If you know a little bit of history, अगर तुमने थोड़ा सा भी दुनिया के बारे में knowledge है तो तुम्हें पता होगा कि 1991 में USSR disintegrate हुआ था, the Soviet Union. So disintegrate मतलब बहुत सारी countries, यूक्रेन
ताजिकिस्तान, रशिया, they were all part of the USSR. एंड जब USSR ब्रेक हुआ वो 1991 में हुआ, तो डिसइंटीग्रेशन मतलब USSR का अलग हो जाना, अलग अलग टुकड़े हो जाना, ब्रेक हो जाना. Next, now Donetsk and Luhansk are two self-declared republics run by rebels backed by Russia. तो सबसे पहले तो सेल्फ डिक्लेयर्ड रिपब्लिक उन्होंने खुद डिक्लेयर कर दिया कि वी आर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और फिर उसमें रेबल्स जो हैं जिनको रशिया बैक करता है. तो रशिया बैक करता है मतलब पीछे से सपोर्ट करता है, पीछे से हेल्प करता है या सहारा देता है, तो सपोर्टेड बाय रशिया. With Russia mobilizing thousands of troops on its border with Ukraine, which has sparked fears of war, Donbas is once again at the center of a looming conflict. Now, number one, spark. Spark जैसे हम कभी भी देखते हैं ना, लाइट का स्पार्क, करंट का स्पार्क, फायर का स्पार्क. तो स्पार्क मतलब वही जिसने चिंगारी भड़का दी है दोबारा से एक और वॉर की. एंड जो लास्ट लाइन है, Donbas is once again at the center of a looming conflict. I want you people to tell me the meaning of the word looming. Now read this line. I've told you half of the words already in this line, and you tell me the meaning of the word looming. What is a looming conflict? Looming का मतलब something that is impending, something that is bound to happen, that will definitely happen, or you know, that's just standing around the corner, just ready to come in or ready to come forward. तो looming मतलब किसी चीज़ का मंडराना, जैसे कोई मंडरा रहा है अटैक करने के लिए, शिकार करने के लिए, ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है. तो द रिस्क ऑफ अ कन्फ्लिक्ट और द इम्पेंडिंग ऑफ अ कन्फ्लिक्ट की ऑलमोस्ट होने वाला है कन्फ्लिक्ट, या कन्फ्लिक्ट की शुरुआत हो रही है, या कन्फ्लिक्ट जैसे कोई शिकारी मंडराता है, उस तरीके से लूमिंग कन्फ्लिक्ट, something that is about to happen. Next, the current crisis started with the 2013 Euromaidan protest in Ukraine when the pro-Western protesters forced President Viktor Yanukovych to resign in 2014. Counter-protest broke out in the Crimean Peninsula and Donbas, where a major where the majority of people speak Russian. Immediately after Russia's annexation of Crimea, protest picked up in Donbas, eventually leading to an armed rebellion. So, immediately का meaning आपको पता होगा, just after. Annexation मतलब किसी कंट्री को फोर्सफुली अपने कब्जे में ले लेना, या किसी टेरिटरी या एरिया को फोर्सफुली अपने कब्जे में ले लेना. तो जैसे क्रीमिया का एनेक्सेशन हुआ, and then eventually matlab ki, you know, one thing happened, second thing happened, and the third thing was an after effect of these two things. So eventually matlab that this was bound to happen, this was the next thing that happened. In Donetsk and Luhansk, separatists declared self-ruled republics in May 2014. Ukraine and Western countries accused Russia of supplying weapons to the rebels and sending military personnel to the region to fight the Ukrainian army. Now, what is the meaning of the word accused? It is very easy from reading this line. इस line को पढ़िए ज़रा. Ukraine and Western countries accused Russia of supplying weapons to the rebels and sending military personnel to the region to fight the Ukrainian army. What is the meaning of the word accused here? So in this scenario, accuse का मतलब होता है इल्ज़ाम लगाना. प्रूफ नहीं होता है आपके पास बहुत ज़्यादा, पूरी तरह से साबित नहीं कर पाते हो, बट इल्ज़ाम लगाते हो, पॉइंट आउट करते हो किसी पर. So that is the meaning of the word accuse. Russia's official position is that it has nothing to do with the insurgency, but President Vladimir Putin said in 2016 that Russia was forced to defend the Russian-speaking population in the Donbas. In Donbas, ethnic Ukrainians make up a majority, while ethnic Russians are the largest minority. But over 70% of the population across the ethnic divisions speak Russian. Moscow says the post-Yanukovych regimes in Kyiv are discriminatory to the Russian-speaking people in the east. Now, first of all, what is ethnic?
एथनिक बेसिकली पॉइंट्स आउट टू योर रूट्स, आप किस ग्रुप के हो बेस्ड ऑन योर बायोलॉजी, बेस्ड ऑन योर फिजिकल एट्रीब्यूट, सो दैट इज योर एथनिसिटी. Second, when we're talking about discriminatory treatment, discriminate मतलब एक ग्रुप को फेवर करना, दूसरे ग्रुप को डिसफेवर करना, भेदभाव करना. Unable to defeat the Russian-backed rebels, Ukraine agreed to the Minsk Protocol after holding talks with the rebels and Russia that were mediated by France and Germany. Now, mediated by France and Germany, again, this is very easy. Sentence को पढ़ेंगे तो हम उसका मीनिंग ही समझ जाएंगे कि यूक्रेन और रशिया ने मिन्स्क में एक प्रोटोकॉल साइन करा और वो प्रोटोकॉल साइन करने में फ्रांस और रशिया ने मीडिएट करा, यानी उन्होंने हम बोल सकते हैं मीडिएटर का या बीच में एक न्यूट्रल पार्टी का रोल निभाया. द प्रोटोकॉल कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट सीज फायर. इमीडिएट मतलब अर्जेंट, जल्दी, एंड सीज फायर मतलब स्टॉपिंग वायलेंस, आर्म्स का यूज बंद करना, फाइटिंग बंद करना. As the agreement collapsed, the Ukraine trilateral contact group comprising representatives from Russia, Ukraine and OSCE called another summit of the concerned parties in the Belarusian capital in February 2015, which is called Minsk II. Now, concerned parties matlab parties that are connected with the issue, parties that have a stake or something connected with this particular issue, जिनका कुछ लेना देना है इस issue से या इस topic से. Now similarly we'll just read 2-3 more lines and then we'll try to see another few words. तो आप देखो एक ही छोटा सा आर्टिकल आपको ऐसे 10-15 नए वर्ड्स सिखा देता है. So eventually, as I said earlier, newspaper is a very good source of learning vocabulary. As per Minsk II, Ukraine and rebels were required to enforce a full ceasefire. Enforce matlab implement karna. To enforce a full ceasefire in the Donbas region, pull out heavy weapons, matlab heavy weapons ko hata dena, and start talks on holding local elections. Ukraine is also supposed to devolve more powers to the Donbas republics, introduce constitutional reforms codifying the decentralization of power, and announce an amnesty to the rebel. Now, devolve matlab to give, और ज़्यादा पावर्स देना यूक्रेन की साइड से डोनबा रीजन को, उसके साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करना, दैट मीन्स एक प्रॉपर लीगल सिस्टम लगाना वहाँ पर, और जो लॉज हैं उनको कोडिफाई करना, दैट मीन्स जैसे इंडिया में बेयर एक्ट्स होते हैं, हर लॉ की एक प्रॉपर बुक है, एक सेट ऑफ रूल्स हैं जो रिटन है, तो दैट इज कोडिफिकेशन. एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना लोअर अथॉरिटीज या अलग अलग एरियाज एंड आर्म्स ऑफ द स्टेट. एंड अनाउंस एमनेस्टी टू द रेबल. एमनेस्टी मतलब माफ़ कर देना, एक तरह से मर्सी दे देना कि आपने जो गलती करी थी उसके लिए हम आपको माफ़ कर रहे हैं, दैट इज एमनेस्टी. सो टेक्निकली नाउ आई एम लीविंग द पैसेज हियर, but let's just see all the underlined words that we came across in this passage. So technically काफ़ी सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 and I don't know, like approximately 20 words. Just by reading this much of the passage we were able to learn like 20 new words. हो सकता है सब लोगों को ये सारे 20 वर्ड नए ना लगे हों, कुछ लोगों ने 5 नए शब्द सीखे, कुछ लोगों ने पूरे 20 नए वर्ड सीखे, but this was just one article, you know. So therefore newspaper is a very important source that can help you prepare for passage based vocabulary, practice passage based vocabulary, and overall improve your vocabulary if you're very vigilant and curious about the meanings of these words. So that will be the end of the session. राकेश LLM के बारे में पूछना है. बेटा मैं LLM के बारे में नहीं बता सकती आपको बिकॉज मैं क्लैट के लिए प्रिपेयर कराती हूँ, बट आपको LLM के बारे में पूछना है, पूछ लीजिए. आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, जल्दी से अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए. जितना मैं हेल्प कर पाऊंगी उतना मैं आपको बता दूंगी. बट ऑल्दो ये 5 ईयर LLB BA LLB कोर्स 5 ईयर कोर्स के प्रेपरेशन की क्लासेज हैं, बट आप पूछ लीजिए. यू हैव 30 सेकेंड्स.
सो एनीवे गाइस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, 15 दिसंबर को 6 मंथ बैच स्टार्ट हो रहा है एंड आपका 17 दिसंबर को 12 मंथ बैच स्टार्ट हो रहा है. ये 2023 के लिए है, ये 2022 के लिए है, और भी बहुत सारे बैचेस हैं अनअकैडमी पे जो रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं. तो 2022 वाले 6 मंथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड 2023 वाले 12 मंथ सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. और ये सारी सब्सक्रिप्शन के लिए 10% डिस्काउंट मिलेगा. जब तुम यहाँ इस पेज पे नीचे NLU लाइव लिखोगे, उसको अप्लाई कर दोगे, ऑटोमेटिकली ये प्राइजेस चेंज हो जाएंगे. सो NLU LIVE इज द कोड. ओके, दैट इज़ इट. राकेश, लास्ट 30 सेकेंड्स. अगर आप अभी भी अपना क्वेश्चन टाइप नहीं कर रहे हो तो देन आई विल एंड द सेशन. Bye bye everyone. This will be the end of the session. I'm just waiting for last 30 seconds for Rakesh to type his doubt, and then I'll just end the class. ओके, दैट इज़ इट. तो राकेश, अभी तक मेरे पास आपका डाउट नहीं आया है कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में. सो आई एम एंडिंग द सेशन हियर एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द सेशन एवरीवन. गुड नाइट.